Parang kang tanga, babe. Hoy, anak, kumilis ka nga. Ang tamad-tamad mo. Mamaya na lang, Nay. Ikaw pala mo nandito, ha? Ikaw sa boyfriend ko. Ayaw mong sumunod sa akin, ha? Meron akong magic remote dito. Pag pinindot ko to, susunod ka sa akin. Di naman gagana sa akin yan, Nay. Talaga ba? Magwalis ka. Ano nangyayari sa akin? Ano nangyayari? Deserve! Mag-aaral ka ng maayos. Nay, 99 po yung grade ko sa school. Ang bilis ah. Wala na akong pera eh. Bigyan mo ako ng pera. Pera? Nay, ito po 100,000 para sa'yo. Salamat anak! Ang saya naman gamitin nito. Nay, tama na! Hindi! Manahimik ka dyan! और अम्मा ने 3 बेटियां पैदा करने की गलती कर दी थी। Hala, ang cute! Anak, tignan mo cute ng baby oh! Opo, cute nga. Parang gusto ko na rin ng apo. अपना जिक्र सुना था। Pindut! Nay! गुस्से में Ito na बुड़बुड़ाते po yung हुए apo दादी nyo. से कहने लगे, Mama! इससे अच्छा तो मेरी Anak, शादी akala नसरीन dito, से mabilis करवा ka दो। nga. अपने दिल की बात कहकर अब्बा तो घर से Anak, निकल गए। tingnan niyo po yung nakita ko. उनके जाने के बाद पीछे से दादी कहने लगी, अगर मैं नसरीन को ले Yan! आई Diyan ka तो magaling! आज वो Puro मुझे बिस्तर cellphone! से Buti लगा pa yung चुकी anak ni होती। Aling Susan tumutulong किसी sa यतीम bahay. बेसहारा Pero Nay, का तो कोई nakakatawa po आसरा kasi. नहीं है। Sumasagot ka pa. इसे तो हजार Buti pa yung बार anak ni Aling मारेगा Susan hindi पीटेगा sumasagot. तो भी sige ये po, यहाँ Nay. खामोशी से A पड़ी रहेगी। few moments इतनी later. मजाल Good नहीं news, कि मेरे Nay! सामने 95 आवाज yung नहीं grade उठा ko sa सके। school. ये कहकर 95? दादी Ba't तो ang सर baba? झटक के Buti अपने pa yung anak कमरे ni में Aling चली Susan. गई। Naka 99. लेकिन मुझ Hindi पर ka kasi ये nag-aaral na हकीकत maayos. खुल गई कि दरअसल Matutulog na lang मेरी ako. दादी के दिल में क्या है। Yan! Diyan ka magaling! थोड़ी देर बाद अम्मा Tutulog ka कमरे na से naman! बाहर Buti निकली pa तो yung anak ni वो Aling Susan बिल्कुल hindi बेहाल, natutulog. Bumaba ka nga! आंखें सूज के सुर्ख हो रही थी, Kakain na चेहरे lang पे ako. जगह जगह नील Yan! से Kumakain ka na naman! बिखरे Wala ka बाल, lang ginawa kundi kumain! उनके दर्द Buti की pa yung anak अक्कासी कर Tama रहा na! था। मैंने अपनी माँ को देखा तो susunod ng मेरा bata दिल ka? कैसे मार Buti pa yung... कौन सी औलाद Buti pa अपनी si माँ Aling को इस Susan हाल masarap में magluto देख ng कर खुश ulam. हो सकती है। Ikaw itlog lang, wala मैं pang फौरन lasa. अम्मा के पास लपकी, Nagre-reklamo उन्हें ko sa पानी 95 पिलाया, grades. Eh, ikaw, कुर्सी ano पर ako mo na बिठा high के school? उनसे पूछा कि आज अब्बा ने Sige किस nga, बात pakita mo किया? sa akin. तो अम्मा Buti ने pa si मुझसे Aling Susan, नजर hindi चुरा mapanakit. Ikaw, कहने लगी तेरे mapanakit. अब्बा को अपनी Anak, मनमानी may करने pupuntang के mamumula सिवा और dito. क्या आता है? Para saan, Nay? Unki Siyempre, ako para kaya malaman si kung Bernadette. kailan tayo yayaman. मैंने Ah, उनसे sige, Nay. आंसू Itatanong ko kung kailan ako कहा, magkakajowa. अम्मा बता तो सही Ah, sige, sige. Maganda ka na. A क्यों few अब्बा मेरा moments नाम ले रहा later. था? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? Sinong mauna sa और inyo? फिर अम्मा ने रोते Ako हुए mauuna. एक ऐसी बात Anong बताई itatanong mo? कि मेरे होश ठिकाने आ गए। Kailan ako yayaman? Pahiram ng kamay mo. Oh, ito. और वो भी उसके वालिद की मर्जी से। Malapit ka lang yumaman. ये सुनकर सारी ही Talaga? दोस्तें बड़ी खुश हुई। Yayaman na ako. फिर उसी Oo. शाम रज़ाक Basta के maging माँ-बाप masipag ka lang. रिश्ता लेकर चले Magtayo गए। ka ng business. वही बड़ी सी स्याह ako naman po. पर आकर रुकी। Sige, Kasi anong date itatanong mo, ka siya, Iha? last Kailan time po ako magkakajowa? उसे पूरा यकीन हो गया कि आने वाला रिश्ता Hindi ka na रज़ाक magkakajowa. Ha? बहुत खुश Hindi थी। pwede to. Gusto ko magkajowa. Ako sa Pero Jaya. pwede natin itong baguhin. Ang logo kasama Basta, sa magbayad ka lang. Sige, sige, logo magbabayad ng ako. Shining ko Kunin mo na lahat ng pera ko. Basta magkajowa lang ako. Hawakan mo kamay ko. उन्हें शादी की जल्दी थी इसलिए झटपट रिश्ता तय कर दिया। Marabay siya, wala. रज़ाक के वालिद ने बताया Ayan, कि मेरा may jowa ka रिश्ता na. बदल गया है। Nasa labas na. 10 दिन बाद Talaga? लौटेगा तो हम धूमधाम से शादी Hi, करेंगे। ako yung magiging jowa ये mo. सुनकर तो शाहीन पूरी तरह Bakit से ang शर्मा pangit? Mukhang अपने talampakan. कमरे में चली गई। Nay! Oh, bakit? Anyari? Sinabihan niya akong pangit. Totoo naman eh. उसके सर पे Ababastos ka! Use, Aalis na kami kuch dito! samajh nahi aaya. Nasaan yung mga bayad nyo? Kuch Hulaan deer mo ke magkano baad ibabayad उसकी namin बात sa'yo? अपनी आई तो 5,000! कुछ Nasaan na? दीवानों की तरह Mali! खुशी में नाचता Wala kami ibabayad देखते sa'yo हैरान। dahil scam ka! Shahin Magbabayad की kayo! माँ के गले Ibayas na kayo dito! Layas! कहने लगी अम्मा मैं दुल्हन बनूंगी और शादी करके चली जाऊंगी। उसके चेहरे पे एक अजीब Crush ba yun? उसकी माँ ने बेटी के सर पे Magpapapansin हाथ nga ako. कहने लगी बड़ी बेशरम है रिश्ता ang init sa Pilipinas! के वो आते Ang init, grabe! So hot in the Philippines! और कहाँ तेरी खुशी संभाले Ba't ayaw pa rin ako pansinin? शाहीन की माँ Ah, बेटी ah, को खुश lang. देखकर खुद भी खुश थी। Hello? फिर शाहीन की माँ ने बताया कि Oo, 15 si Vince तारीख to. की शादी तय हो Si Vince! Oo, si Vince! 10-15 दिन ही है इसीलिए बहुत Kung तेजी से ikaw ay तैयारियां masaya, करनी है। pumalakpak ka! शाहीन ने अम्मा को यकीन Kung दिलाया कि ikaw वो ay उनकी masaya, पूरी मदद pumalakpak करेगी। ka! और फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर शादी की तैयारियां Ayaw शुरू kong कर दी। pansinin, ano ba yan? अलबत्ता रज़ाक से उसका दोबारा रास्ता नहीं हो सका क्योंकि वो मुल्क में नहीं था उसका फोन बिल्कुल बंद था। Vince! Uy, Vince! Vince, na paano ka? Tinamaan ako. Saan? ना रज़ाक की Sa'yo. तस्वीर देखी Gotta be, get her a look
जैसे इन सब चीजों की Ate, जरूरत ही नहीं। tignan mo to nabili kong kwintas. तकरीबन Oh, 8 ano meron dyan? Pag sinuot mo to, lahat ng gusto mo, magiging totoo. Sus, scam lang yan, para bilhin mo. Totoo nga ate, tingnan mo. Maging pangit sana ate ko. O di ba? Wala naman nangyari. Maganda pa rin ako. Tumingin ka sa salamin. Totoo nga. Ibalik mo na ako sa dati. Ibalik mo na sa dati yung ate ko. Asa na nga yan? Gusto ko ng bagong cellphone. Wow, ang galing. Gusto ko na magka-jowa. Tumatawag. Hello? Hi, ako nga pala si Christian, yung jowa mo. Ah, jowa kita. Bakit ang dumi ng bahay? Ano kayo dito mga boss? Maglinis nga kayo, punyeta. Nay, pwede tumahimik ka muna? उसने थक कर बिस्तर की ओर से Pwede bang देखा। halipan siya lang yung tawagan सोचने natin? लगी कि जब रज़ाक उसे दुल्हन बना Anak, देगा, malapit na akong तो mga उसे anak. देखकर पूरी Magkakaroon ako ng kapatid, Nay. Oo, anak. Magiging kuya ka na. Nakaka-excite naman, Nay. A few moments later. Mare, musta na? Uy, Mare, buntis ka din pala? Oo, Mare. Malapit na nga akong mga anak eh. Sabay pala tayo mga anak, Mare. Sigurado mas maganda anak ko आवाज आई kesa sa kanya. तो वो चौंक के उठ बैठी। Di ka sure, जल्दी mas से maganda अपना anak घूंघट ko, खींच लिया। magmamana ba naman sa akin? उसने सोचा था कि वो रज़ाक को Sakit na dyan ko. आसानी से उसके Mga anak ka na? Darling, tulungan mo ako. Anong mangyayari, darling? Mga anak mata ako, darling. Mga anak ka na? O sige, ikaw ka muna doon. जिसने मेरी पूरी Sakit na dyan ko. Mga anak na din ata ako. जिस शख्स Mga anak ka din? Oo. Hinga kayo ng malalim ha, tapos ire. को सुपुर्द किया वो शख्स मुझे इतना बड़ा जख्म दे गया Sige, malapit मैं na. आज तक उस जख्म को अपने दिल में छुपा Hindi ko na जिस शख्स kaya. से मैंने मोहब्बत की, किसी ने मेरी पीठ को Darling, खंजर eto na anak natin. मुझे मेरी Ganda ng सुहागरात anak को इतना ko. बड़ा झटका Ang मिला कि मैं ganda-ganda mo, संभल ही anak. ना पाई क्योंकि जब मेरे मन पसंद शौहर ने मेरा घूंघट Ba't magkamukha anak namin? तो Ha? मेरे सर पर Ikaw ba tatay nun? Darling, I can explain. शाहीन Mare. अपने माँ बाप की इकलौती बेटी Walang hiya kayo. वो बहुत ही लाडो करती है उसके माँ बाप उसे मुझे हर बात Magsama kayo. इसलिए वो कुछ Uy, जिद्दी Vince, और napadaan ka. मनमानी Hi, करती tita. May gusto lang po akong dalawin sa जो mga कह anak देती niyo. उसे Ikaw पूरा ah, करके may gusto तब ka ano? O siya, शाहीन pasok ka ने muna. 12वीं जमात का sige po, इम्तिहान tita. दिया तो माँ बाप को उसकी शादी का ख्याल सताने लगा लेकिन शाहीन ऐसे ही किसी राह चलते इंसान Uy, से शादी Brianna, नहीं करना magaling चाहती kay थी Prince. Hi, उसे Brianna. लव मैरिज करने का शौक था I'm Brianna. वो चाहती थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हो Oo, yung sipon वो mo. कम से कम उसके लिए कुछ जज्बात तो रखती हो लेकिन उनके खानदान में पसंद की शादी के सब Kumain na खिलाफ kayo. थे Salamat po pala sa लड़का pagpapakain लड़की sa akin. अगर अपनी पसंद Masarap बयान yan. करते तो Masarap उन्हें ba? बेहया का खिताब दिया जाता और सब उनके वालिदैन को बुरा Masipin sa इसलिए pupulunan. शाहीन को भी ये आज़ादी हासिल हुई Prince, ito tubig. कि वो अपनी पसंद या ख्वाहिश को बयान कर सके Salamat, उसके माँ Brianna. बाप भी खानदान और बरादरी के दबाव का शिकार Pinakaba mo ako. वैसे भी Pasensya ka उसकी na, जिंदगी में कोई nabulunan ऐसा ka शख्स tuloy. नहीं था Okay lang po, जिसके tita. लिए Ang उसके gusto दिल ko में nga जज्बात nun eh. होते May gusto po akong या ligawan sa जिसके mga लिए anak वो niyo. अपने खानदान Sige से na. बगावत करे Gusto ko pong ligawan si... लेकिन फिलहाल उसने अपने Ako to माँ ba बाप को ये nililigawan कह niya? के टाल दिया था कि वो अभी इतनी Si जल्दी Kyle. शादी नहीं करना Matagal ko na po चाहती siyang gusto. वो आगे Si Kyle? पढ़ना चाहती है Ako? उसके वालिद भी इकलौती बेटी को पढ़ाने के हक में थे इसलिए अच्छा रिश्ता ना मिलने तक Nasaan na ba yung mga शाहीन anak को ko? आगे Mga पढ़ाने का anak! इरादा किया Gising na kayo! उसका 13वीं जमात में दाखिला हो Kuya, गया gising! Gising ka na, kuya! शाहीन लड़की थी वो हमेशा Ayaw mo gumising, ha? इसीलिए gising! उसका दोनों के बड़े कॉलेज में दाखिला Kyle! हो गया Anong ginawa mo? शाहीन अपने अब्बा के इस फैसले से बड़ी Punta ka sa खुश akin! थी। Good उन्होंने morning, शादी का babe! इरादा Kamusta कर tulog लिया। mo? Eto, उसने नए सिरे napanaginipan से ko si पढ़ाई Nicole. शुरू कर Sino दी si Nicole? वो Kapag रोजाना mo yan, no? अपनी Aso सहेलियों के namin साथ yun, कॉलेज baliw. जाती। Akala ko may iba ka na eh. I और love कोई you, शाहीन की babe! किस्मत पर Ano रश्क ba yan, ate? Ang वो aga-aga. ना सिर्फ Jowa बहुत inaatupag mo. खूबसूरत और हसीन Huwag ka nga थी, बल्कि epal. Ikaw उसके nga पास puro किसी aral eh. चीज की Kumanap ka कोई nga ng कमी jowa mo. कॉलेज Kaya में sana हर kung sa'yo, लड़की उसे puro हसरत lande. भरी नजरों Kaya से puro ka देखती थी bagsak. और Tagal उससे bumaba दोस्ती ng mga की ina. ख्वाहिश रखती Sabing bumaba na kayo eh. Sabing bumaba na kayo. Manda kayo sa akin. Sabing bumaba na para kumain eh. Ilalak ko tong pinto. Huwag na kayo bababa. Lagot kayo. Yan, ang babagal nyo kasi. Kakausapin ko na lang yung baby. Ba't di pa kasi kayo bumaba? शाहीन हमेशा Gutom से na ako. बहुत तेज मिजाज Bahala थी। kayo dyan. Ang iingay इसीलिए nyo. वो गुस्से में अपना बैग Nakaka-stress. गाड़ी से Nagtitiktok na lang ako. तो उसी
सीट पर बैठे जवान लड़के को देखकर वो कितनी देर दम बखुद रह गई। वो गोरा चिट्टा खूबसूरत सा लड़का था जिसकी सुतवा नाक उसे मजीद A खूबसूरत few बना रही moments later. थी। उस लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाहीन को देखते हुए उससे माफी मांगी। Ano ka ba, anak? Natural These beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. Ano ba yung mga tanong mo, Noy? I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Hai guys, kalau kalian punya roti sebanyak ini, enaknya dibikin apa ya? Di video kali ini aku bakalan bikin 3 kreasi olahan roti yang bisa banget untuk ide jualan nih guys. Untuk langkah yang pertama, kita tuang 500 ml susu UHT full cream, tambahkan 1 sendok tepung maizena, keju parut, dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan margarin, kita aduk kembali sampai larutannya mengental seperti ini ya guys. Oh, kasama niya pala lolo niya. Langkah selanjutnya kita siapkan beberapa lembar roti tawar. Setelah itu kita beri olesan yang sudah kita bikin sebelumnya guys. Dan kalau olesannya udah merata, di atasnya bakalan kita kasih topping keju mozzarella seperti ini ya guys. Kalau udah, ini tinggal kita panggang aja. Di sini aku panggangnya menggunakan air fryer dan kita panggang kurang lebih sekitar 5 menit. Sambil menunggu kreasi roti yang pertama matang, di sini kita siapkan 2 buah roti tawar. Tengahnya kita kasih coklat meses dan juga keju mozzarella. Setelah itu kita tutup dan kita rekatkan menggunakan gelas seperti ini guys. Nah, bentuknya bakalan kayak gini guys. Sekarang kita sisihkan, kemudian tuang 1 butir tepung panir. Hah? Mamamatay? Di ko kaya Kalau mawala udah, ka, kemudian babe. kita pecahkan 1 butir telur. Setelah itu kita kocok-kocok sampai merata. Kemudian kita celupkan rotinya ke dalam telur sambil dibolak-balik sampai merata. Setelah itu tinggal kita celupkan ke dalam tepung panir. Kalau udah dibalur tepung panir kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita masak. Celupkan ke dalam minyak panas satu persatu. Pastinya jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata ya guys. Maghiwalay na tayo! Wala ka pang kuha sa akin! Dan kalau udah kecoklatan kayak gini, jangan lupa diangkat satu persatu. Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Gusto ko lang Oh yumaman iya, sisa pinggiran roti yang tadi jangan dibuang ya guys, mending dibikin ini aja.